today we are going to study our first lesson, Introductions to Computer. So in our previous video we have learned what is computer, features of computer, and then we have learned advantages of computer. So today we are going to history of a computer. So history of a computer is like based on the technology used in building a computer. Computers are divided into several generations. So let us briefly learn about the different computers generations. So let's come to the first design, analytical engine. In the year 1834, Charles Babbage, a Scottish mathematician, first developed the concept of a computer by designing a calculating machine called analytical engine. He is known as father of a computer. So in the year 1834 में चार्ल्स बेबेज नाम का एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन. दैट्स वाई it's known as analytical engine, and he is known as father of a computer too. So like today's computer, analytical engine had an input device, an input for calculations, control unit, memory unit, even output devices too. But unfortunately Babbage couldn't complete the construction of this machine. So however, he is known as the father of a computer. So let's start with the first generation of a computer. In the year 1945, J.P. Eckert and John Moshley, two American engineers, used vacuum tubes to build ENIAC, the first calculating machine. Compute means to calculate. Since the ENIAC only do calculations, it came to be known as computer. So now this is the image of vacuum tube. In the year 1945, after 1834, directly पहली first generation, the first computer were designed in 1945 by J.P. Eckert and John Moshley. Those were two American engineers. They used vacuum tubes in ENIAC. This is your ENIAC computer और ये है vacuum tube. They use 18,000 vacuum tubes to consume electricity in ENIAC. So many improvements were made in the computer since then. It begins to be used not only for doing calculation but also for writing, listening to music, drawing, playing games, and many other tasks. However, it is still called computer because compute means to calculate. So that's why it's called computer because it can calculate. The first analytical engine was also a calculating machine. That's why it's known as computer. ENIAC was so large that it would occupy a big hall. यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा एक हॉल पूरा उसने ऑक्यूपाई किया है स्पेस. ठीक है. इट हैड अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. इस ENIAC के अंदर ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है ये इतनी बड़ी, ये वैक्यूम ट्यूब्स करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. It had a fantastic speed of doing calculation. It used to perform 5,000 additions in 1 second and even 500 multiplication in 1 second. So that's why it is called a first generation of a computer, because the first computer using analytical engine, using the concept of Charles Babbage, they designed ENIAC using vacuum tubes, and it's known as first generation of a computer. Now come to the next one, second generation. In our second generation, in 1948, William Shockley invented transistor which replaced vacuum tubes in a computer. Transistor was 200 times smaller. It consumed less electricity. The transistor computer was created in 1953. So in our second generation, transistor, first generation में यूज़ किया गया vacuum tubes, around 18,000 vacuum tubes, but in second generation vacuum tubes were replaced by transistors. Transistors
यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रांजिस्टर 200 टाइम्स वर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड इट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई द कंप्यूटर गेट स्मॉलर। इन्हें आप अपनी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, पिछले इस इमेज में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, बिकॉज देयर वर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है एंड ट्रांजिस्टर इज स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब और लेस इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है। पहला ट्रांजिस्टर कंप्यूटर was created in 1953. This is your transistor computer, the first transistor computer. Now come to the next one, third generation of a computer. In 1958, Jack Kirby invented the chip. He fixed many transistor and other electronic components in a one single chip called integrated circuit. The third generation computers were much cheaper, smaller in size, and processing speed is quite high. You can see the image of third generation computer. This is the third generation computer and smaller than second generation computer, and these are the IC chips, means integrated circuit chips. ठीक है. In 1958, Jack Kilby is the one who invented this chip and created the first integrated circuits computer, means third generation computer. अब इस चिप के अंदर इसने बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स फिक्स्ड किया और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी फिक्स्ड करके ये एक चिप डिज़ाइन की गई टू मेक योर कंप्यूटर्स प्रोसेस फास्टर एंड हाई लेवल. Today, thousands of transistor and other electronic components are fixed on the small chips. Same as जैसे हमारा today's computer है, आज का कंप्यूटर बिल्कुल ऐसा ही है, बट इट गेट्स स्मॉलर. लेकिन ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़ द फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़ द फर्स्ट विच cheaper, smaller in size, and process speed is quite high. Now come to the next one, fourth generation computer. Fourth generation computers is our today's present days computer. The present day computers are fourth generation computers. As the result, the VSLI, very large scale integration technology, a million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip. The microprocessor chip was invented in 1969 by Ted Hoff. A microprocessor chip controls the entire working of the computer. अब ये एक definition में पूरा work आपके कंप्यूटर का बता दिया गया है कि ये जो चिप है इट कंसिस्ट एटलीस्ट 360 पिंस इन इट. ये बहुत स्मॉल होती है साइज में और ये पूरे कंप्यूटर का प्रोसेस पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करती है. दिस चिप इज़ द वन हु कंट्रोल्स द होल प्रोसेस ऑफ योर कंप्यूटर और ये इन्वेंट हुई थी 1969 में बाय टेड हॉफ. Ted Hoff, the inventor of microprocessor chip. And this is the fourth generation computer, present days computer you can say. Now come to the types of computer. Types of computer, we have learned the history of a computer and fourth generations also. So now we are going to learn types of computer. How many types of computer in our world? Depending on the size, cost, utility, speed and efficiency, computers can be broadly classified into following categories. Right. तो फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स एक कंट्री का एक कंप्यूटर होता है. ओनली वन कंट्री कंसिस्ट वन सुपर कंप्यूटर. मतलब दुनिया में जितनी सारी कंट्री है सबके पास अपना एक सुपर कंप्यूटर है. लाइक इंडिया का सुपर कंप्यूटर बेंगलोर में है एंड इट्स नोन एज परम. So let's start. Supercomputers are large size computers and so they are also called monster computers. Yes, because they are very large. You can see, as you can see the image, these are the this is the supercomputer which consists the lots of space. Like पूरा एक floor consist करता है. A supercomputer is a computer with great speed and memory. This kind of computers can do jobs faster than any other computer of its generation. They are usually thousands of times faster than ordinary personal computers. And see, as
इट सेज के ये बहुत लार्ज होते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मॉन्स्टर 2। एंड ये ग्रेट स्पीड और मेमोरी रखते हैं एंड इज दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर डू फास्टर जॉब एज एनी अदर कंप्यूटर। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर को भी हम ले लें तो उससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये कंप्यूटर काम करता है। दे यूजुअली थाउजेंड्स टाइम्स फास्टर देन आर पर्सनल कंप्यूटर्स। So they are used to perform the most complex tasks which require high speed and precision. It takes a supercomputer 90 seconds to do work which your PC could do in 20 hours. ये डिफरेंस है कि जो हमारा PC प्रेजेंट डे कंप्यूटर जो अभी हमारा यूज़ कर रहे हैं, दिस कंप्यूटर कैन डू दैट वर्क, सेम वर्क इन 20 hours, बट दैट वर्क इफ़ वी गो विथ सुपर कंप्यूटर्स क्या होगा, वो 90 सेकेंड में वो प्रोसेस आपको करके देगा, वो कैलकुलेशन, वो टास्क आपको परफॉर्म करके देगा। सुपर कंप्यूटर्स यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। दे यूज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट द रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड लॉन्च देम इनटू स्पेस एंड कंट्रोल एंड मॉनिटर देयर मूवमेंट्स। स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स या रॉकेट्स जाती है, उन सारी रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ सुपर कंप्यूटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर्स, but they are very fast and expensive. Large scale industry use mainframe computers to design and manufacture of electronic goods and other machines. Now you can see these are the mainframe computers. It has CPU larger than our normal CPU. ये हमारे normal CPU से बड़ा होता है। More than 100 people can use mainframe computer at the same time. And the large scale industries are the mainframe computers in the design and manufacture of electronics goods and other machines. मतलब ये बड़ी बड़ी मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज़ लाइक बैंक्स, एयरलाइंस, रेलवेज, दीज आर द स्पॉट्स वेयर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वेर यूज। Now come to the next one, mini computers. These are smaller and cheaper than mainframe computers. It can be used by 10 people at the same time. Mini computers are also used by large institutions like banks, government departments and other organizations. Simply आप इमेज यहाँ देख सकते हो, this is called mini computer. It's a mini computer. ये मेन फ्रेम से स्मॉलर होता है, but the difference is कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एट अ टाइम 100 पीपल्स यूज़ कर सकते हैं, बट मिनी कंप्यूटर्स 10 पीपल्स तक लिमिटेड है कि 10 पीपल्स तक एक टाइम में 10 पीपल उससे कनेक्ट होकर यूज़ कर सकते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर उस एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से 100 पीपल्स तक कनेक्ट होकर अपना वर्क प्रोसेस कर सकते हैं, अपना टास्क कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टोर। नाउ कम टू द मिनी। These computers, like mainframe computers and mini computers, are also used by large institutions like banks, commercial organizations, government departments and other organizations, but in a small level. Now come to the next one, microcomputers, जो हम use करते हैं in today's life, we are using normal people's use कर रहे हैं, it's called microcomputer. These computers are in homes, offices and schools. They cost less than mini computers and only one person can use microcomputers at a time. There are 3 types of microcomputers. Desktop computers, as you can see, ये है इमेज डेस्कटॉप कंप्यूटर की। Then laptop computers, these are the laptop computers, and handheld computers mean your mobile phone, or this is the handheld computer. So students, our first lesson is completed. So we have learned today computer क्या होता है, what are the features of computer, then we have learned advantages, then some history, generations, and then we have learned how many types of computers we have in this world. So students, work hard and you will get the exercise part.
थैंक यू।